Hi everybody, welcome to CAT 2017 Slot 1 LRDI. I know we're still doing this, but I want to do it perfectly, even if it takes way too many videos. Hai na? So we are doing 2017, especially because this was the paper that was last set by IIM Lucknow, was the convener of this paper as well. Today we are doing hard sets and we have one set left. We have already done the easy ones in this video, moderate ones in this video, और हार्ड वाले में ये दोनों हमने खत्म कर दिया था. वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेट विच वाज सीईटी. ठीक है, दिस इज द लास्ट वन ऑफ द मोस्ट हार्ड सेट्स ऑफ द एंटायर पेपर. So these icons you can use them to click on the link after you download this as a PDF. इसे अगर आप PDF में व्यू करते हो और इन बटन्स पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली टेक यू टू द वीडियो, या फिर आप उसी प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेट नंबर 8 which is CET. This is actually a Venn diagram set which a lot of us, when we first have a look at the set, we may not realize this. All right, so this came in as a surprise. Right, you can actually kind of get hints of it, but you will realize that there are too many factors involved, right? So it is a Venn diagram set, but it involves a little bit of setting that you have to do before that. This is a math based one and it's a process based one. मतलब क्या, इसमें कोई process है कि ये अगर नहीं हुआ तो ये है, ये अगर नहीं हुआ तो you know, an input output kind of a situation with conditions, है ना? तो वैसा है ये. Here is the set. Take a while, pause करो, पूरा पढ़ो, समझो इसे, and then we'll read this together. Well, I hope you've read this. आ जाइए, start करते. Applicants for the doctoral programs of MBA Institute of Engineering and Bombay Institute of Engineering have to appear for a common entrance test, which is a CET. ठीक है? The test has 3 sections: physics, chemistry, and maths, PCM. Among these appearing for CET, so among those appearing for CET, those at or above 80th percentile in at least 2 sections, and at or above the 90th percentile overall are selected for AET. Okay, and AET is something, is a test that is conducted by AIE. It is used by AIE for final selection. I'm not going to read this and not take down any notes because then it's useless. Then I'll forget what was what. I'll get confused. I'll mix everything up. So I'm going to take this down with the help of the notes. ठीक है, इसे मैं notes बनाऊंगा. So what are they saying? कि जो लोग CET दे रहे हैं, right, out of the people who are giving CET, for the people who scored 80 percentile and above 80th percentile in at least 2 sections. Okay, so greater than equal to 80th percentile, I'm not writing percentile, okay, in at least 2 subjects. So there are only 3 subjects: physics, chemistry, maths. At least 2 means what? 2 subjects or 3 subjects. ठीक है, so in 2 or 3 subjects, and at or above the 90th percentile overall, greater than equal to 90th percentile, they got overall. Okay, so what happens to these guys? These guys move on to be eligible for the test AET. Okay, and if they write AET and they clear, they get into AIE. That is your MBA Institute of Engineering. ठीक है, if they write it and they clear, they go to AIE. Cool, perfect. For the 200 candidates at or above 90th percentile based on CET. So at or above 90th percentile overall in CET, they're talking about this. We're going to put a hold on this entire paragraph. Go back to this. BIE uses a different process for selection. So AIE ka selection process is clear. You write CET, you get 80th percentile in 2 or 3, or you get 90th percentile overall, you are eligible to write AET and you get into AIE. BIE uses a different process if any candidate is appearing in the AET by AI. So anybody who is writing AET, BIE considers their AET score for final selection provided by the candidate is at or above the 80th percentile in P. Nice. इसमें से, इस टेस्ट में से, if you clear, you get into AIE, and also
if your score, right, any other, so what are they saying? BIE considers their AET score for final selection provided the candidate is at or above the 80th percentile in physics. So in this, at or above 80th percentile in physics. Yes. Any other candidate at or above the 80th percentile in physics in CET. So now they're talking about CET. So this guy will be considered for BIE. Okay. This guy will be directly considered for BIE, and any other candidate who has 80th percentile in physics. So chemistry, maths we don't know, when we're not talking about. Overall we're not talking about. They're saying 80th percentile in physics in CET, but is not eligible for AET. So not 90th percentile, not more than one subject. So only physics, right? So only physics 80th percentile or above in physics only, है ना? In physics, right? So it's not necessary physics only, right? Physics only, yeah, physics only. Then what is happening? But who's not eligible for AET is required to appear in a separate test conducted by BIE. Okay, a separate test, test by BIE. Okay, they write this test by BIE for being considered for final selection. So if they clear this, they get into BIE. The only way to get into AIE is to write the CET, get 80th above in two or three subjects, get 90th above overall, get into AET, right? The AET is the test. Please keep this in mind. AET is the test. So after CET, you have to write the AET. You have to write the AET, and if you clear, you get into AI. That's the only way to get into AI. CET, AET, you get into AI. But to get into BIE, there are two cases. One, people who cleared the AET, they can go to AI, or they have a shot at BIE if they have 80th percentile in physics, definitely physics. So it doesn't matter whether you get how much you get in chemistry or maths or overall. If you get 80th percentile in physics, you get to go to BI, right? You can choose now. And for people who got 80th percentile in physics in the CET, they get to write a test, another test by BI to get into BI. So BI 2 entry points, AIE only 1 entry point. MB में घुसने का सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है, PAMB में घुसने का 2 एंट्री पॉइंट्स है, ठीक है? Cool. This is what the first and the last paragraph are saying. Now having a look at the third paragraph, what are they saying? So they've said something here. Altogether there are 400 candidates this year who are at or above 80th percentile in physics. Okay, so at or above 80th percentile in physics are how many? 400 people. Okay, total of 400 people who got at or above 80th percentile. Please keep this in mind. They're not saying only physics. ये only physics है, ये only physics नहीं है, physics है, ठीक है? So physics could be in chemistry and maths also, could be overall 90, we don't know, but at least 80th percentile in physics, ठीक है? Now for this other paragraph that we have, right? This other paragraph that we have, this you would have seen कि उसमें Venn diagram बना है, right? How do we know this is going to be a Venn diagram? Now for the 200 students, there are some 200 students who are at or above the 90th percentile in CET. Overall 90th percentile in CET are 200. So out of these two conditions, this one condition, 90th percentile overall, they are saying is 200 people. Okay, this is 200 people they're saying. Out of these people, now if you see, what are they saying? The following are known about their performance in CET. No one is below 80th percentile in all three sections. 80th percentile in all three sections कोई भी नहीं है. मतलब क्या? At least one section there could be where they are less than, where they are greater than 80th percentile. Okay, so if we were to start making the Venn, we know we have to talk about physics, chemistry and maths, because physics ka score matters, right, for getting into BIE. Exactly two sections: physics, chemistry, physics, maths, maths, chemistry. Number of candidates only in physics, only in chemistry, only in
math, this tells you that this has to be a Venn diagram situation, right? Number of candidates below 80th percentile for 3 situations, again ratio is given. So it has to be a 3 set Venn diagram with 1 physics, 1 chemistry, 1 maths. The overall being 200. Overall being 200. Who are these 200 people who got 90th percentile overall? है ना? Okay. So we have one set where we are talking about getting at least 80th percentile in physics. Another set at least 80th percentile in chemistry. Another set at least 80th percentile in maths. Question point number 1 says no one is below 80th percentile in all 3. इसमें भी 80 से कम, इसमें भी 80 से कम, इसमें भी 80 से कम, कोई भी नहीं है. So this is 0. N is equal to 0. Okay. Second one says 150 are at or above the 80th percentile in exactly 2 sections. So we're talking about exactly 2 sections, right? Exactly 2 sections, which is this, this and this. I'm going to start bringing in variables now to make it easy for us to deal with the solution process, right? So we have A, B and C. A plus B plus C is going to be how much? 150. Exactly 2. That is why we did not include this. इसे include कर देते तो at least 2 हो जाता. 2 and 3. We did not include that. ठीक है? This is done. Point number 2 is done. The number of candidates at or above 18th percentile only in physics is the same as. So only in physics कौन लोग है? Only in physics, these guys, okay, is the same as 80th or above in only in chemistry is the same as the number of candidates at or above the 80th percentile only in maths. This is the same. So I'm going to call this D. This is D, and this will also be D. This will also be D. Okay. See, I'm not naming these elements, these variables, I'm not naming them unless and until they appear in the point. Condition में उसके बाद ही मैं उसे name कर रहा हूँ, वरना नहीं कर रहा हूँ. Otherwise what will happen is we'll have D, E, F, then you will write D is equal to E equal to F, and then that will only increase the amount of work that you're doing, right? So slow down on the naming of the variables, rely them on the conditions. Condition में जब वो आता है तब उसे लगाओ, ठीक है? So point number 3 भी हो गया. Point number 4 क्या बोल रहा है? The number of candidates below 80th percentile in P. So below 80th percentile, at least greater than equal to 80th percentile ये है फिजिक्स का. मतलब इनके बाहर क्या क्या है? D है, C है, N है but N 0 है. So we have 2D plus C, है ना? यहाँ पे लिखते हैं इसे. तो ये क्या बोल रहे हैं? लेस देन 80th परसेंटाइल, है ना? लेस देन 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स is basically which guys? D plus D plus C, which is 2 times D plus C. Less than equal to 8, less than not equal to, less than equal to 80th percentile in chemistry. मतलब leaving out this circle, what do we have? 2D plus B. Yeah, and we have less than 80th percentile in maths. That comes up to what? इसके बाहर, that is 2D plus A. What they're saying is these terms 2D plus C, 2D plus B and 2D plus A are in the ratio 4:2:1, right? So 2D plus C will be equal to 4 some variable. I don't want to use A, B, C, D. I'll use X. Okay, just to show that this X is dispensable. ये X का कोई value आएगा. The moment I get the value of X, this X will be sent out. ठीक है? तो it's just a dummy variable that we are using. 4X, ये इसका ratio 2 है, so 2X, इसका ratio 1 है, so X. है ना? So instead of writing this 4:2:1 ऐसा 4:2:1 and then sitting and dividing them and cross multiplying and getting into all of that, what I've done is I've called this 4X, this is 2X and this is 1X. ठीक है? This way, now we have it in terms of variables and then common variable X के terms में we can equate them and do whatever we want to do with them to get the values. ठीक है? So now if you have a look at the kind of variables that we have, there's only one missing, तो उसे भी include कर देते हैं. There's only this E missing, which is getting 80th percentile in all 3.
Now if you notice here, they are saying that a plus b plus c is 150. Okay, a plus b plus c अगर 150 है, टोटल 200 हमें पता है, टोटल दिस पूरा टोटल इज 200, उसमें से ए बी सी अगर मैं निकाल दूं 150 तो क्या बचता है मेरे पास, d प्लस डी प्लस डी प्लस ई. So can I say the remaining 3d, the remaining 3d plus e that we have should be 200 minus 150, that other 50. Cool. So now we have to sit and find out the value of a, b, c, d, e. I know that I can find out the value of e if I can find out d. I can find out d if I can find out e. I can find out a, b, c and d if I have the value of x. अगर x है मेरे पास, we can do stuff with this, right? So let's see what stuff we can do, है ना? Stuff तो मैं बोल रहा हूँ. Let's see what stuff we can do here. So if I were to put all of this in one equation, कैसे? By adding them. This plus this plus this, 2d, 2d, 2d is 6d. Plus a, b and c we have. A, b and c we have. This should be equal to x, 2x, 4x, which is 6x, 7x. Here मेरे को पता है for a fact that a, b and c, ये जो वैल्यू है a, b and c वो कितना है, 150 है. So I will have what, 6d plus 150 is equal to 7x. है ना? We have to work with this. अगर मेरे को x का वैल्यू मिला, मेरे को d का वैल्यू मिल जाएगा. x का वैल्यू और d का वैल्यू मिला, मेरे को abc मिल जाएगा. abc मिला मतलब d मिल गया तो e भी मिल जाएगा. So there is, it all depends upon one value. x का अगर वैल्यू मैं निकालता हूं, if I find out the x value of x, I can find d. With d I can find a, b, c as well as e. So it all now comes down to one variable x. Find the value of x, you are good to go, right? So here what we are going to do, 6d plus 150 is equal to 7x. We have to work with this. Okay, try to find out the possible values. Since nothing else is given to us, all 4 clues we've used. We've also used the total being 200 here by bringing this 3d plus e equal to 50. तो सब कुछ हमने यूज कर लिया और कुछ बचा नहीं है. तो नाउ वी रिजॉर्ट टू व्हाट, ट्रायल एंड एरर. अब हम रिजॉर्ट करेंगे ट्रायल एंड एरर पे. यस, लाइक आई सेड, ट्रायल एंड एरर तो होना चाहिए, बट फिर ऐसे कितने वैल्यूज है, बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है फॉर एक्स एंड फॉर डी. दिस इज गोइंग टू गो वे बियॉन्ड. वी आर गोइंग टू डू अ कैलकुलेटेड वन. ओके, नॉट अ रैंडम अंधाधुन ट्रायल एंड एरर, नहीं, कैलकुलेटेड वाला. ठीक है. सो व्हाट वाज द इक्वेशन वी हैड देयर? 6d plus 150 is 7x. 6d plus 150 is 7x. तो 7x अगर कोई 7 का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 7x अगर 7 का मल्टीपल है, तो ये जो 6d plus 150 है ये भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? बट 150 7 का मल्टीपल है, नहीं है. 6d 7 का मल्टीपल है, नहीं है. So here you can go start applying values for d. d का value 0, 1, 2, 3 ऐसे लेके कर सकते हो, but it will take a long time, right? So you have to think here to try to reduce the amount of calculation at least. If we can't reduce the process, at least reduce the amount of calculation. So if you know remainder theorem, अगर आपको remainder theorem पता है कि 150 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, जब रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है, सेम 7 को 6d को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर आता है, उसे ऐड करने पे आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए. दैट्स द आइडिया, राइट? तो जब 150 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तब क्या रिमाइंडर आएगा? 140. 147 इज डिविजिबल, सो 3 विल बी द रिमाइंडर, है ना? 3 आपका रिमाइंडर रहेगा यहाँ पे. यस, दिस इज जस्ट टू गेट अ बेसिक वैल्यू. अगर एक बार एक बेसिक वैल्यू आ गया उसके बाद हो जाएगा ये, है ना? 3 का रिमाइंडर चाहिए, तो 6 इंटू डी प्लस 3, 6 इंटू डी कुछ होना चाहिए, प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 7 देयर सेइंग, राइट? या 7 टाइम्स x, वॉट एवर. तो अब यहाँ पे चालू करो फटाफट से. d इक्वल टू 0 विल वर्क? नो, क्योंकि अगर ये 0 है, 0 प्लस 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 7. नो. d इक्वल टू 1 काम करेगा? नहीं. d इक्वल टू 2 काम करेगा? d इक्वल टू 2, 1 क्योंकि 6 प्लस 3 9 नहीं होगा. 2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15, नहीं काम करेगा. d इक्वल टू 3 अगर हम करेंगे, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 21, ये काम कर रहा है.
ये काम कर रहा है। इफ d इज इक्वल टू 3, अगर d का वैल्यू 3 है तो 6 इंटू 3 18 प्लस 3 21 इज डिविजिबल बाई 7। yes that means d equal to 3 will definitely work. So what happens when d is equal to 3? आपको actual x की वैल्यू चाहिए, not remainders, actual x की वैल्यू चाहिए। तो 6 into 3 is 18, 18 plus 150 is 168. So 168 by 7, x का वैल्यू क्या होगा? x will be 168 by 7, which is 140 20 times and then 28 4 times. Yes, so when d is equal to 3, x will be 24. Seems to make sense? When d is equal to 3, x will be 24, right? Perfect. तो एक बार अगर आपको ये मिल जाए, now I am showing you how to avoid doing 4 5 6 7, इतना कब तक करेंगे, till when, right? So to avoid that, one very simple trick I'll tell you, because it is completely reliant on number system, right? Remainders पे rely करता है. So here look at this, factors पे multiples पे rely करता है. ये 6 into something जो है, 6 into something, this is not a multiple of 7, बट इसे जब मैं 150 पे ऐड कर दूं तो इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7, करेक्ट? तो ये अगर एक मल्टीपल 7 का हुआ तो अगला मल्टीपल जो 7 का होगा, वो कब होगा? 7 के साइकिल में। तो 3 पे अगर हुआ तो नेक्स्ट साइकिल विल बी 10 पे। 6 इंटू 10 60 प्लस 3, सो प्लस 7 आपको ऐड करना है। d इक्वल टू 3, 3 प्लस 7 इज 10। यू ऑल्सो डोंट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि अब x का क्या होगा? x का क्या हो रहा है? मल्टीपल्स ऑफ 6 में बढ़ रहा है, साइकिल्स ऑफ 6 में बढ़ रहा है। तो अगर 24 हुआ, 24 प्लस 6 30। ट्राई करो, चेक करो इफ इट वर्क्स। 6 इंटू 10 60, 60 प्लस 150 इज 210। अगर 7x 210 है तो x क्या होगा? 210 by 7 30। साइक्लिसिटी, यस, वंस यू नो दैट फिर तो फट 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 करके हो जाएगा। यस, सो d इक्वल टू 10, x इक्वल टू 30 विल वर्क। d इक्वल टू नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्लस 7 17, x क्या हो जाएगा? 30 प्लस 6 36। ये ऐसे चलता रहेगा, दिस विल कीप गोइंग ऑन, है ना? नेक्स्ट क्या होगा? d इक्वल टू 24, x विल बी इक्वल टू 42। ये ऐसा चलता रहेगा, दिस विल कीप गोइंग ऑन, बट वी नीड टू नो वेयर टू स्टॉप। फिर कब खत्म करेंगे? ये तो चलता रहेगा, वेयर डू वी स्टॉप हियर, राइट? तो ये किस पे डिपेंड करेगा? हियर इट विल डिपेंड अपॉन दिस। ये 3d प्लस e इक्वल टू 50, हमें पता है e एक इंटीजर वैल्यू है, d एक इंटीजर वैल्यू है। वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर d, क्योंकि अगर d का मैक्सिमम वैल्यू आया तो यहां पे वी विल नो वेयर टू स्टॉप, इधर पता चल जाएगा किधर स्टॉप करना है। तो आई नीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d, d को मेरे को मैक्सिमम रखना है, मतलब 3 टाइम्स d को मेरे को मैक्सिमम रखना है। 50 इज अ नंबर दैट इज नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय d, है ना? 50 नहीं है, 49 नहीं है, 48 है, राइट? तो कैन आई से 3d इक्वल टू 48 होने के लिए e का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। तो e का मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। e का मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। इफ e इज 2 देन 3d विल बी 48, या d विल बी 48 by 3 16। सो d का मैक्सिमम वैल्यू 16 है, मतलब d 16 से ज्यादा नहीं जा सकता। d 17 24, are you seeing this? 17 24 31, all of these get ruled out। 17 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, 31 38 कुछ नहीं हो सकता। तो what do we have? We have two cases now, 2 cases हैं। फर्स्ट केस वेयर d अगर 3 है तो x आपका 24 आ रहा, फर्स्ट केस। सेकेंड केस है व्हेन d इज इक्वल टू 10, x आपका 30 आ रहा है। यस, विद दीज 2 केसेस, अब इन 2 केसेस को रख के कैन यू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज, क्योंकि x का वैल्यू है तो d का वैल्यू है, d का वैल्यू है तो abc का वैल्यू है, और e का भी वैल्यू है। तो विल टेक द फर्स्ट केस, पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, शैल वी? तो पहला केस क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 3 है, सॉरी d का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 24 है। इसे रख के हमें a b c और e का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो e का निकाल लो। यू नो दैट 3d प्लस e इज 50, 3d प्लस e इज 50। तो 3 इंटू d लिख लेते हैं एक बार के लिए, 3d प्लस e इज इक्वल टू 50, राइट? e का वैल्यू निकलेगा यहां से। तो 3 इंटू 3 इज 9, e का वैल्यू क्या आएगा?
50 minus 9, 41. Yes, for A, B and C, A क्या होगा, 2D plus A is X, तो A क्या होगा, X minus 2D, 2X minus 2D, 4X minus 2D. X minus 2D, 2X minus 2D, 4X minus 2D. यस, इससे मेरे को A की वैल्यू आ जाएगी क्या, 24 माइनस 6, 18. A की वैल्यू आ गई 18. यहाँ पे 48 माइनस 6, 42. B की वैल्यू आ गई 42. C का क्या है, 4 into 24, that is 96 minus 6 is 90. Yes, so 18, 42, 90 ना, सारे वैल्यूज है अपने पास. D है, A है, B है, C है, E है. Everything that we need here is available. But this is one case, okay? Please keep in mind. ये एक केस है. We also have the second case now. Second case में क्या हो रहा है? Second case में D10 है और X जो है वो 30 है. तो A क्या है? X minus 2D, 30 minus 20, 10. B क्या है? 2X minus 2D, 60 minus 20, 40. C क्या है, 4X minus 2D, 120 minus 20, 100. D अपने पास है 10. E क्या होगा, 150 minus 3 times 10, 150 minus 30, 20. Yes, so we have 10, 40, 100 and then 20. ठीक है, so both the cases you can put it in one chart itself if you want, या दो बना लो, जैसे भी whatever you're comfortable with. दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है. सो आई एम मेकिंग 2 डिफरेंट चार्ट्स, 2 चार्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है. ये फर्स्ट वाले के हिसाब से है. दिस इज विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट वन वेयर D वाज इक्वल टू 3 एंड X वाज इक्वल टू 24. उसमें से हमें मिला A 18 है, B 42 है, C 90 है, E अपना 41 है, ठीक है. और ये दूसरे वाले के हिसाब से here where D was equal to 10 and X was equal to 30. उसके हिसाब से D is equal to 10, A is 10, B is 40, C is 100, E is 20. ठीक है. So we have two bays now, 2 cases now, case 1, case 2. ये अपना पहला bay है. This is our second bay, right? So see how this is a Venn diagram question but not direct Venn diagram question. How this is a Venn diagram question that requires us to do trial and error with the help of number systems, है ना. ऐसा blindly trial and error भी नहीं है. It requires a lot of thinking. Yes, once this is there, then I think all the questions will fall into its places. But even the questions are not very direct, right? थोड़ा सा उसमें thinking है. Let's have a look at the first one. What best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BIE who were at or above the 90th percentile overall in CET? So out of these 200 people, they're saying, out of these 200 people, how many people would have to write the BIE का separate test? Where do we have BIE का separate test? यहाँ पे बात करी थी हमने. तो BIE का separate test कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो 80th percentile in physics only है. Correct? 80th percentile or above in physics only. तो आउट ऑफ दीज 200 पूछ रहे हैं, आउट ऑफ दीज 200 कितने लोगों को, आउट ऑफ दीज 200 कितने लोगों को सेपरेट टेस्ट बाय BIE कौन लोग लिख रहे हैं? वो लोग जिनका 80th एंड अबाव इन फिजिक्स ओनली, है ना. सो 80th अबाव इन फिजिक्स ओनली. वी हैव 2 केसेस. एक केस है जहां पे 3 लोग दे रहे हैं सिर्फ 200 में से. दूसरा केस है जहां पे 10 लोग दे रहे हैं. तो आवर आंसर विल बी व्हाट, 3 और 10, व्हिच इज ऑप्शन ए. एग्जैक्टली 10 वी आर नॉट श्योर. 5 डेफिनेटली नॉट, 7 डेफिनेटली नॉट. गुड, डन, सुपर्ब. तो सी हाउ दिस व्हेन प्लस दैट चार्ट, दैट प्रोसेस चार्ट जो हमने बनाया था, फ्लो चार्ट जो हमने बनाया था, दोनों का कॉम्बिनेशन है. ट्राई द सेकेंड वन.
if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall, which is these guys, and also at or above the 80th percentile in all three sections. All three sections मतलब कौन? E. So they are saying if E is a multiple of 5, 5 का अगर multiple है, E is a multiple of 5, तो सबसे पहले ये देख लो, E multiple of 5 यहाँ पर है 41, not a multiple of 5. 20 is E, this is a multiple of 5. So we need to look at this case, not this case. ठीक है, इसे completely avoid, just look at this. What is the number of candidates who are at or above 90th percentile overall, which is this, and at or above 80th percentile in both physics and maths in CET? So where do we have physics and maths? So physics and maths, we have these 40 guys, right? But is the answer 40 guys? Will the answer be equal to 40? Why does 40 seem wrong here? 40 क्यों गलत लग रहा है? Why? Because when they say 80th percentile in physics and maths, are they saying only in physics and maths? Are they saying कि chemistry वालों को देखना ही नहीं है? नहीं. So when they say physics and maths, you have to include physics and maths only, and also where you have physics and maths and chemistry. Yes, the physics and maths only is 40. Physics, maths and chemistry is 20. Our answer is actually 60. Yes, so a lot of us when we rush, बहुत बार जब हम जल्दबाजी में रहते हैं, we kind of end up making mistakes with these simple languages, right? Simple words like only. Simple words में हम गलती कर देते हैं when we are in a rush. So please avoid being in a rush because they take advantage of it. ठीक है? Next question, question number 3 is also theta. So we saw one question that was theta. This is our second one. If the number of candidates who are at or above 90th percentile overall, which is this pura Venn diagram, and also at or above 80th percentile in all three sections in CET is actually a multiple of 5. Again, multiple of 5. This case is out. Only look at this case. How many candidates were shortlisted for the AET for AIE? AET के shortlisted वाले, right? AET के shortlisted वाले. Who are the guys who are directly shortlisted for AET? कौन है वो लोग? AET में कौन आते हैं? 80th percentile in 2 subjects or 3 subjects, 90th percentile over. तो 90th percentile overall तो 200 लोग हैं बोल दिया है. इन 200 में से how many cleared in exactly 2 and how many cleared in exactly 3 is the question. So here we have it. Exactly 2, exactly 3. 80th percentile in exactly 2 plus exactly 3. Or all 3. है ना? 80th percentile and above. So exactly 2 इसमें देखना नहीं है, ये वाला देखना है. Exactly 2 is what? This 10, 40 and 100, which is 140, 150. Exactly 3 is this 20. 150 plus 20 is 170. This is our answer. Cool. So simple, once you have a chart to relate to compare, reference the values, आपका आंसर जो है फट करके आ जाएगा. Next one and the last question for the set. If the number of candidates who are at or above 90th percentile overall, which is these guys, and also are at or above the 80th percentile in P in CET, okay, is more than 100, okay. So ये टोटल 200 में से फिजिक्स में बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 100 हैं, मोर देन 100. तो फिजिक्स मतलब ये वाला पूरा, दिस फुल सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल फिजिक्स वाले का है, मतलब नॉट फिजिक्स वाला, फिजिक्स स्टूडेंट्स का है. ठीक है, वी नीड दिस ओवरऑल टू बी 100. लेट्स सी, 42, 83, 93, 93 plus 11, 104. Yeah.
21, 61, 62, 64, 104. तो ये टोटल 104 है, which is greater than 100. Okay. Now we should definitely not get this, क्योंकि अगर दोनों है तो फिर दोनों केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें देखते हैं फिजिक्स स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है. इसमें देखते हैं कितना आ रहा है. 10, 20, 40, 40 plus 40, 80. This is not more than 100, so this case is gone. We'll be looking at only this case, thankfully. वरना फिर डबल डबल का ध्यान में रख के करना पड़ता है ना, तो you will get multiple answers or all that, जो है नहीं ऑप्शन में. So we know that it has to be only one case. Now what is the actual question? How many candidates had to sit for the separate test for BIE? BIE separate test. Separate test BIE. राइट, सेपरेट टेस्ट बीआईई में कौन बैठ रहा है? सेपरेट टेस्ट फॉर बीआईई में कौन बैठ रहा है? वो लोग जिन्होंने एईटी नहीं दिया है. करेक्ट, वो लोग जिन्होंने एईटी नहीं दिया. जो लोग भी एईटी दिए हैं वो डायरेक्ट बीआईई जा सकते हैं, डायरेक्ट एआई जा सकते हैं. बट जो लोगों ने एईटी नहीं दिया, मतलब 80th परसेंटाइल इन 2 और 3 नहीं आया, 90th ओवरऑल नहीं आया, वो लोग. राइट, तो ये क्या बोला है, ये कितने लोग हैं? 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स ओवरऑल, सब कुछ मिला के, एईटी, बीईटी, सीईटी, ईईटी, सब कुछ मिला के 400 है. इन 400 में से हमें किनको निकालना है? जो लोग ने एईटी का एग्जाम दे दिया. करेक्ट, जिन लोगों ने एईटी का एग्जाम दे दिया उन लोगों को हमें निकालना है. या तो 400 में से एईटी वाले गाइस. ओके, 400 टोटल है, उसमें से एईटी वाले लोग, जो लोग एईटी दे दिए है ना. सो 400 में से एईटी कौन लोग देंगे? जिनका 80th 90th परसेंटाइल ओवरऑल, तो ये तो 200 लोग हैं. बट इनमें भी ये दीज गाइस आर देयर, इसमें भी, इन 200 में भी ये लोग हैं, 400 वाले लोग इसमें से कुछ हैं, है ना. So we can't directly subtract that. So what do we have to remove? We have to remove people who got at least 80th percentile in physics, right? And people who got it in chemistry or maths also. Yes, so physics plus chemistry or maths. Are you getting this, guys? ठीक है, so how many people would that be? ये वाला केस लेना है. This case would include 42, 41 and 18. 42, 41 and 18, क्योंकि ये लोग फिजिक्स के अलावा दूसरे में भी हुए. फिजिक्स के अलावा दूसरे में भी हुए. ये हमें चाहिए क्योंकि ये पक्का बीईटी लिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स में 80th अबव लाया. बट ये लोग जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स में, और फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों में हुआ, इन्हें निकालना है हमें. So 42 plus 18 is 60. 60 plus 40, 100. 101 को हमें बाहर निकालना है. ये जो 101 लोग हैं इन्हें हमें निकालना है, क्योंकि ये भाई इनका तो एईटी में हो जाएगा. एईटी ये लोग दे देंगे डायरेक्ट. क्यों? क्योंकि ओवरऑल में 90th परसेंटाइल है इनका, और इनका क्या है, 2 सब्जेक्ट्स में 80th परसेंटाइल है. He'll get in. These 18 guys will get in. These 42 guys will get in because they have overall in this. These 41 guys will also get it because सब में 80th परसेंटाइल है, तो हो जाएगा. ये 3 लोगों का नहीं हो पाएगा. ये 90 लोग इस 400 में नहीं आते, है ना. So we have to do what? We have to do 400 minus 18, 41 and 42, which was how much? 101 I said. तो 300 से 1 गया, 299 हमारा आंसर. Okay, which is option A. Beautiful. So this set is a walking nightmare, क्योंकि first things first, how do we realize that it has to be a Venn diagram? And if it has to be a Venn diagram, what kind of a Venn diagram? How do we make it? 90th percentile का क्या करना है ओवरऑल? 80th percentile in 2 subjects, 1 subject, 3 subjects क्या करना है?
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लगाना है अलग से, एआई का अलग से लगाना है, बीआई का अलग से लगाना है, बीआई का अलग से टेस्ट है, क्या वो सब भी वेन डायग्राम में आएगा नहीं आएगा? So we have multiple questions and this set could actually be been made even more hard had they spoken about BIE में कितने लोग हैं, उनमें से कितने लोगों ने physics, chemistry, maths. So this would have gone to the whole next level which was impossible to solve. ये at least we can say that I wouldn't say it is very easily doable, but थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा efforts लगा के you can. So I would say कि ये set करना जरूरी नहीं है, you can kind of skip it. बट रिमेंबर इसमें 2 क्वेश्चंस है जिसके आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है? तो विद दिस वी आर डन विद कैट 2017 स्लॉट 1 पूरा. कैट 2017 स्लॉट 1 इज कंप्लीटली डन एंड डस्टेड नाउ. यस, ये सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे इजी के, मॉडरेट के एंड हार्ड के इन द सेम प्लेलिस्ट, या आप इस नोट्स को आप डाउनलोड कर लो, यू कैन यूज देम. ठीक है, डन. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चीयर्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज फोकस ऑन कैट 2017 स्लॉट 2. ठीक है, कैट 2017 स्लॉट 2 विल बी द नेक्स्ट वन दैट विल पिक अप. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, चीयर्स.